Morning guys, today is Wednesday and I'm in Bangalore for a week before heading out for the Raipur International Challenge in Chhattisgarh. Today is Wednesday, so on Wednesdays we have match practice in the academy. So I'll be making a vlog of that. It's currently 7:45, practice starts at 10:30. So I'm gonna have some coffee and then make some breakfast and leave for the session. For breakfast today, I had 3 eggs, which I cooked as sunny side up, and bread. I usually use ghee or olive oil to cook my food, and today I used ghee. I try and include protein in all 3 meals, be it eggs, chicken or any other meat. Okay. There we go. I've been experimenting with waking up early before my early morning sessions since the last 2 or 3 months, and I've realized how big of a difference it makes in how I feel during the morning sessions. So before I would wake up, say an hour before the session started, and by the time the session would start, I would still feel a little groggy or sleepy or lazy. And midway through the session, I'd wake up and get into the training, and I felt that was not very efficient, and so I wanted to try waking up much earlier the session. So if the session were to start at 7 a.m, I would wake up at 5 or 5:30 and then try to give myself some space to basically wake up and start off the session well without feeling lazy. So I've been waking up early, eating something, taking a shower before training and then heading for training, and that has made a big difference in how I feel and how efficiently I'm being able to train, because especially the shower makes me feel really awake, and I try and take the shower with cold water, and that really wakes me up, and by the time the session starts I'm already awake and I can make the most out of the session from the very beginning. Especially in the early morning sessions, because if the session is a little late in the morning, then it's fine, like we wake up early anyway and we have time to settle in. But it's a little bit of work to wake up early, but it's really worth it. So if that's something that you could try, I would suggest you try it, and it has made a big difference in how I feel and how efficient it has been. I would suggest you can try it too.
शिशिर अभी ये कौन सा मील खा रहे हैं हम लोग? भाई ये है सुपर प्रोटीन। अरे नहीं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट लंच भाई सेशन कैसा था? टाइम तो बता उधर। अरे टाइम कैसे मालूम पड़ेगा इन लोग को? कोई बात नहीं। कैसा था गेम सेशन? दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं लंच कर रहा हूँ। मैंने सुना आप बहुत अच्छा तगड़ा जोक्स बोलते हो। एक तुमने नहीं सुने क्या कभी? नहीं एक सुना। नॉन वेज वेज यूट्यूब के लिए मैं वेज ही सुना भाई। ठीक है, वेज से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, हम लोग के पास साथ अश्विन भी है। ये भी मेरा भाई है, मतलब मास्टर। इसको मतलब ऐसा साइड मत करो यार, लेफ्ट आउट फील करेगा बेचारा। मैं जा रहा हूँ। हेलो, एक इंट्रोडक्शन दे दो भाई, आपका नाम? मेरा नाम टुल्लू। ओके, अश्विन टुल्लू पंचर। टुल्लू पंक्चर और अश्विन और शिशिर द ग्रेट। तो सुनो, एक दीपक नाम का लड़का रहता है। अच्छा। वो नया एक कंपनी ज्वाइन करता है। ओके। तो क्या रहता है, वो कंपनी में मैनेजर उससे पूछता रहता है कि भाई वो तुम बहुत, दीपक बोलता है, हमेशा बोलता रहता मैं बहुत फेमस हूँ, मुझे सब जानते हैं, मुझे सब जानते हैं। तो वो कंपनी का मैनेजर बोलता है भाई तुम्हें इंदौर के जाकिर खान पता है क्या? बोलता हाँ भाई पता है। तो जाकिर खान बोलता है ठीक है, इन लोग किसी कंपनी काम से, ऑफिशियल काम से इंदौर जाते। बोलो भाई तेरे को जाकिर खान पता है ना, मिलवा चल। तो जाकिर खान घर लेके चलता है। तो जाकिर खान के पास जाते हैं इन लोग। जाकिर बोलता है अरे, जाकिर खान के घर गए तो बोलते अरे दीपक भाई, जाकिर भाई बोलता है अरे दीपक भाई कैसे हो, क्या हाल चाल? तो अरे भाई मैनेजर बोलते हैं अरे भाई क्या बात है, तेरे को जाकिर भाई जानते हैं। फिर इन लोग किसी काम से भोपाल जाते हैं। तो भोपाल में ना, अब तुम्हें पता है कि नवाब पटौदी बोलने से सैफ अली खान, तो बोलते तेरे को सैफ अली खान जानते हैं? तो बोलते हाँ भाई जानते हैं, सैफ अली खान भी जानते हैं। बोले यार, बोले लेके चल मिलवा। तो सैफ अली खान बोला अरे सैफ भाई बोलता अरे दीपक भाई कैसे हो, क्या हाल चाल, कैसा क्या? तो मैनेजर बोलता है अरे यार भाई तू, तेरे को इतनी लोग जानते, इतनी पहचाने, तो हमारे साथ काम क्यों कर रही है? ऐसा सोच में पड़ जाता है। फिर इन लोग किसी काम से मुंबई जाते हैं। तो मुंबई जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ बोलता है तेरे को अमिताभ बच्चन पता है? दीपक भाई बोलता है मेरे को पता है। तो दीपक भाई बोलता है कि ठीक है चलो मिलते हैं, मिलवाता हूँ आपको। तो ये जाता है और अमिताभ बच्चन के उसमें फर्स्ट फ्लोर होता है ना, ऐसे बालकनी में खड़े होकर मिल रहा होता है। तो बोले और दीपक भाई, अमिताभ बच्चन बोलता और दीपक भाई कैसे, क्या हालचाल, कितने दिनों के बाद, ऐसा क्या? तो इतने में मैनेजर को हार्ट अटैक ही आ जाता है उसमें। हार्ट अटैक ही आ गया। तो वो दौड़ के आता है और दीपक भाई दौड़ के आते बोलते हैं कि अरे भाई आपको मैनेजर साहब आपको बोला तो था कि अमिताभ बच्चन मुझे जानता है। तो बोले अरे माँ की आंख, वो मेरे को इसलिए हार्ट अटैक नहीं आया कि तेरे को अमिताभ बच्चन जानता है, मुझे इसलिए हार्ट अटैक आ गया कि मेरे बाजू से एक रैंडम आदमी जा रहा था, वो बोलता है अरे ये दीपक भाई के बाजू में ये बुढ़ा कौन खड़ा हुआ है? And we're back. That was it for today's session and also today's vlog. I'm extremely tired because the first few days after a series of tournaments is always really tiring, because when you're playing the tournaments you're not training as much, so the level of strength, power and conditioning goes down a little bit. So when training is resumed, it's really tiring. It was a fun, intense day of match practice, and games day is always very interesting, and there's so many ways that you can approach it, and that is what makes it fun, especially in training, because you get to know what works for you and what does not, and in terms of routine, what kind of build up makes you perform the best. And these are things that I really like experimenting, and also the mysterious aspects of sports, because sometimes it feels like everything is going really well and you feel great leading up to the match day. You feel like you're going to play the best match ever, and then the complete opposite happens and you can't play at all. And the other flip side also happens where you're feeling not good at all and end up playing really well. So these are things that are worth thinking about and what makes the whole process very interesting. But what I've come to learn is that regardless of what is happening, it is important to stay consistent with the work and effort, provided you desire what you're looking for and make the necessary changes that the whole practice teaches you, and it works out well. I hope you enjoyed today's vlog, and these things that I've shared are some things that I've learned from my practice and try to implement as I progress, and hope these come to value to you as well in some way. Thanks. See you guys super soon. Bye.